A very good afternoon to everyone. I, Hani Khurana, second year student of TME Media School, welcome you all to the Vibrant India series, episode 42. I also welcome all our viewers who are watching us live on Facebook. Vibrant India series is an initiative of DME Media School for celebrating 75 years of India's independence. This series will be a year-long exercise. As part of this series, we invite inspiring personalities for online talk, interview, and interaction with our students. The invited personality for this series are from all the walks of the life and from Narain, popularly known as DJ Narain. Celebrated singer, bureaucrat, music composer, and performer, theatre director, and communication strategist, former director, FTII Pune. We welcome you, sir. Thank you. I would like to take a moment and introduce Delhi Metropolitan Education to our viewers. Delhi Metropolitan Education is an A-grade premier educational institute affiliated to Guru Gobind Singh Indraprasth University, New Delhi, and approved by the Bar Council of India, the Institute and BJMC programs. TME believes in imparting world-class education to its students while training them to develop and enhance their skills. This education and training enables them in taking up challenges of the industry and creating a space for themselves in the competence and vigor. DME Media School is one of the most promising media institutes in the country. It offers BA in journalism and mass communication. It is recognized as a school focused on the growth of its faculty and students through academic and co-curricular activities. Major flagship events and initiatives of the school includes BJ Varghese Lecture Series, Peer-to-Peer FTP, International Film Festival SIFI, International Conference ICANN, and Vritika Convention of Media Students. And newly added in the list is VIS, Vibrant India Series. It is our privilege to introduce you to the personality of episode 42 of the VIS. Now I invite Christina Sajan, first year student of BJMC program, to introduce our guest for the day. DJ Narain is a music composer, performer, rock band singer, theatre director, publisher, academician, and sports management expert. He is perhaps the only bureaucrat in India to have actually been a real-life rock star as one of the lead singers of one of India's most loved pop rock group of the 90s and first decade of the century, Aryans. With musically hits like Aankhon mein tera hi chehra, Ye hawa kehta hai kya, Dekha teri aankhon ko, Hai dil, and Kehta hai yahi dil baar baar, etc. He has more than 3.4 crores hits on his songs on YouTube. DJ Narain has also produced and directed two hugely popular mega theatre productions, Jamunya, which was adapted in 10 languages, and Priya. He has also authored an anthology, Soldiering on the saga of the Indian Armed Forces. Before being handed over the reins of FTII Pune as its director, he had held assignments in the Song and Drama Division, Government of India as its director, Films Division, Government of India as its Director General. DJ Narain has been associated with various film festivals and related events as a member of LA India Connect Short Films Festivals, International Congress of Film Schools, First National Students Films Award, Film Festival of India, Sam Spiegel Film School Awards, Labasna, Missouri, Literary Festival, and DDA Arun Prabha channel for Northeast. I now request the technical team to show some glimpses from his life. Okay, so from here onwards, who will take it forward? I am taking. Yeah, okay, yeah. Welcome everybody in episode 42 of Vibrant India series. We launched this digital program on August 9 in 2021
on the anniversary of Quit India movement. This is an initiative of DME Media School, Delhi Metropolitan Education. Vibrant India series is an online series to get inspiration from distinguished personalities. This program has been conceptualized and created by Professor Ambrish Saxena. Vibrant India series is a tribute to all those people who have made supreme sacrifices for the independence of our motherland. India will be completing 75 years of independence this year. We started celebration last year only. This program, VIS, has been launched as a part of these celebrations. 8 personalities from the Defense Forces have participated in VIS till date. These personalities belong to the Indian Army, Air Force, and BSF. Lieutenant General Sanjay Kulkarni, Lieutenant General Vinod Bhatia, Dr. Brigadier P.K. Saxena, Professor Colonel R.K. Dargan, Captain Dharmveer Singh, Group Captain Ashok K. Chodia, and Mr. Virendra Kumar Kaur from BSF. This list includes a woman as well, Squadron Leader Prerna Chaturvedi. 5 personalities from the education sector comprising education planning, teaching, and research have participated in VIS. These include Professor Ujjwal Chaudhary, Dr. Nakul Parashar, Dr. Saurabh Ghosh, Dr. Dev Aikat, and Dr. Gurmeet Singh. 4 personalities from the journalism, broadcasting, and entertainment sectors have joined the VIS. 2 senior journalists, Mr. Rajesh Badal and Mr. Shambhunath Shukla, have graced this program. While Mr. Sanjay Banerjee belongs to the broadcasting industry as commentator, Dr. Ashish Kulkarni represents the entertainment and animation industry. 6 personalities from the social sector, and notably all women, have participated in VIS. These include Dr. Monisha Behel, Dr. Midula Tandon, Dr. Mridula Seth, Ms. Tripti S. Singhal, Ms. Vibhala Khera, Mr. Bhavrin Kandari, and Padma Shri Jitendra Singh Shanti, an environmental activist, founder of Bhagat Singh Seva Dal and Corona Warrior. 4 personalities belong to art, theatre, and literature. These include Dr. Sachidanand Joshi from Indira Gandhi National Center of Arts, Mr. Arvind Gaur from Asmita Theatre Group, Mr. Lakshmi Shankar Bajpayee, an eminent poet and broadcaster, and Mr. Aditya Arya, an eminent photographer and director of Museo Camera. 2 personalities from the field of law and human rights have graced the VIS sessions. These include Professor Manoj Kumar Sinha, directed the Indian Law Institute, and Ms. Jyotika Kalra, women rights activist and member of NHRC. 10 women participated in 39 episodes of VIS. I have already mentioned about 6 women working in social sector, 1 in the Air Force and 1 in human rights. I also want to make a mention of Mr. Indrani Singh, a pilot, and Mr. Pallavi Fauzdar, an adventure motorcyclist. 3 police officers have also participated in VIS. These include 2 former IPS officers, Mr. Amod Kant, who is known for his distinguished social service for children through his NGO Prayas, and Vibhuti Narain Rai, who has also been a vice chancellor and is an eminent writer. Mr. Rajinder Singh, former ACP of Delhi Police and a celebrated cop, has also featured in VIS. 2 senior IAS officers have also graced the VIS, Mr. Ashok Pradhan
and Mr. Bimal Julka. Mr. S.P. Rawal, authors, and Mr. Augustine Balith, Sufi Sayyid Ajmal Nizami, custodian of Sufi Dargah Nizamuddin Aulia, and Mr. Balindu Sharma Dadhiji also grace VIS. Today in episode 42, we have with us an inspiring personality, Mr. D.J. Narain, who has a unique blend of bureaucracy, art, and music. Welcome, sir, in this program. Thank you. Thanks. Thank you for inviting me. Thanks for inviting me. Thank you, ma'am, for listing out the galaxy of experts we have hosted till now in VIS. I now request Dr. Ambrish Saxena, Dean DME Media School and originator and the ideator of VIS, to take the program forward. Thank you. I welcome again Mr. DJ Narain. So as we all know, and I mean, it's easy to understand how busy he is, always creating something new, because every creative person remains in a different zone. So sparing time to programs and all is really difficult, but he has finally obliged us to be with us in this program with the students and teachers of DME Media School. Now coming to the format of this program, now immediately after this, in the second segment of the program, Mr. Narain, I will be requesting you to please narrate us your own story, because this program has been conceived differently. It's not that a great person is coming to the program and narrating the story. It's like when something is coming from the horse's mouth, then it is more acceptable, it's more reliable, and the ultimate objective of this program is to get the students motivated. They get some inspiration, and they also are full with this confidence that they can also do something great in their lives. So that's basically the objective of the program. And after you finish your life journey, I mean, with all your challenges, your problems, with all your achievements, your goals, and whatever is still you aspire to achieve in life, after that, I will be having certain queries based on whatever you would have told in this session, and that will be followed up by the students asking some questions to you to have some more insight about you and your work. So without delaying much, I request Mr. Narain to please take this session forward and narrate as to what all you have been doing and how you have been moved forward, because you have been wearing different caps, which normally for a common person is difficult to understand how this switching is possible from one place to another, from one career or one profession to another, but you have been doing that quite successfully. That can give you some mantra to the young people, how they can manage their affairs, because the young people find it too difficult to handle the kind of pressure that's there. But you have been doing this, so there is a lot to know from you in today's session. So Mr. Narain, please take it over. Thank you, Ambrish ji. Thank you, Dr. Sushmita. Thank you, Christina. Thank you, everyone, for being so nice and also inviting me. First of all, I'll start on a lighter note. You know, you said how many advantages and disadvantages of wearing so many caps. The first is this: you lose your hair. So, so when you wear too many hats, when you eat all kinds of food, your stomach goes awry. When you wear different kind of caps, your head goes awry. So anyway, so I don't know where to start with, but yes, this question has often popped up within myself and amongst my friends and relatives and person on the road. What do you actually want to do? You know, I often think myself, when I'm in mood of introspection, I'm not a big believer in so-called the normal, the way we look at gods. But at times I've often asked him, please decide, what did you want me to do? So I get no answer. So I keep doing whatever comes. So however, but without, I would not say anything which confuses the youngsters. And but the fact remains, some of those things which happened when we were growing up, like your students की जो age है, उसमें कभी-कभी कुछ लोगों से बातचीत कभी ऐसी हुई या किसी से मिले या कुछ observe करी, it makes a huge difference and impacts your life. So therefore I will take this session seriously,
because I don't know किस बच्चे पे, किस student पे किस तरीके की बात का असर करे और कौन क्या, it will make a difference. But at least I should be serious about it. So, and I try to keep my discussions, my part monologue a bit brief, so that students have more time to speak and have a cross question. But I must compliment you for this wonderful initiative. Meeting this 42nd episode means active 42 different kind of inspirations before the kids in this young age is no joke. I mean, we never had this opportunity when we were growing up. We'll meet you, we'll meet here and there. You know, we will have to make efforts to meet someone who could kind of guide us or give us a light. So, but glad that you're doing it, and you're doing it beautifully, Dr. Ambrish. So, I would start my story with when I was in class 10. I would say before that, it was pretty, I was pretty like any other boy or a girl, generally participating in school activities and being a good student and a good sports person. So I was a bit of everything. So, so when I was in class 4th, I got this prize called all-round best boy award in the institute. But probably that kind of inspired me कि, you know, I can do many things all round. You know, so some small awards हम लोग सेटिंग में डिस्काउंट करते हैं, पर probably कहीं ना कहीं impact हुआ उसका. You know, I can make an effort. So I probably started making an effort. Subconsciously, आपसे बात करते करते I'm thinking aloud about this. कि probably that could be the starting point. कि where it's not necessary that you have to be good in academics, therefore you have to be not so good in sports. Or if you're good in sports, you don't have to be good in academics. I think the things can be carried, all these things could be carried together in case we are able to follow our timelines diligently. Am I audible? Yes, sir. Okay. So probably that then in class 10th, I happened to score 4th position in UP merit list board की जो list होती है. So and I used to play a lot. Somehow I still managed it. So उसकी scholarship से जो पैसे वैसे मिले मेरे को, सब लखनऊ में there's a place called अमीनाबाद, वहाँ पे कुछ म्यूजिक की शॉप्स हैं, अगर कोई लखनऊ का हो वहाँ पे जब, तो मैं जब भी जाता था उधर से कहीं, तो मैं तो शॉप्स को बड़ी हसरत भरी नज़रों से देखा करता था. तो जब पैसे पहले स्कॉलरशिप के पैसे मिले, तब इस तरीके के ट्यूटोरियल्स तो होते नहीं थे, आकाश एंड ब्रिलियंट तो सारी चीज़ें कि, तो हम लोग खुद ही से पढ़ाई करनी थी. तो 10th के बाद जब IIT करना होगा तो उसके पैसे करीब 1.5-2 साल मिले स्कॉलरशिप के. I went to buy some books, but instead of buying those books, I landed up in that music shop. And with all that cash जो बैंक से निकाल के लाए थे, चेक मिला था भारत सरकार ने प्रसन्न होकर दिया था नीचे, पढ़ाई, it was a matter of pride, 2-2.5 हज़ार रुपया कुछ मिला था. तो उसको लेके I ended up buying lots of musical equipments and came back. So my mother asked me, ये क्या है? You know, there was zero musical background in the home. ऐसा कुछ था नहीं, but somehow it used to inspire me music. So I started doing things from there. और जैसे ही first day I got my guitar, probably I felt I have composed a song. दो लोग हंस रहे होंगे, but I felt I have done something. So और खुद को भी अच्छा लग रहा था. And you know, so I think that little inspiration, the sound that I got back by strumming the first note, so वो probably inspired me. And one thing was very clear, but I mean my weakness became my strength. कि I hardly remember anybody's song. तो बेस्ट ऑफ द सॉन्ग्स ऑफ किशोर जी के, रफ़ी के, या मोहम्मद रफ़ी, या नौशाद के, आर डी बर्मन के, मेरी पहली लाइन तो याद होती, दूसरे आगे की लाइन नहीं याद रहती. तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था अदर देन कंपोजिंग माय ओन सॉन्ग्स, कि दूसरे के तो मैं कभी गा ही नहीं सकता था. आई मीन आई नो आई वुड हैव बीन सो, और तो somehow started playing music तब से and started composing. Then I continued with my academics in university. I didn't join obviously IIT because मेरा मन इधर ज़्यादा लगने लगा इसकी तरफ. And I was pretty okay in academics, and to university में भी scholarship positions आती रही, तो I kind of थोड़ा सा एक bohemian personality type की बन गई. और बड़ा happening है, you know, college campus life is different. Oh, he plays guitar, he sings, he's good in academics. You feel आपकी कॉलर ऊंचा करके थोड़ा चलने लगे, and I'm a smart guy and all that kind of. So I mean ज़्यादा सोचा नहीं, but फिर भी I felt probably I was always on a high. So that high, and
continuing to do music and academics, and also at the same time I got involved big time into community work. So I had my own NGO called Kshitij. हम लोग BA में ही बच्चे थे, all of us. We started selling UNICEF greeting cards. फिर उससे graduate हुए कि नहीं greeting cards ही करके क्या करेंगे. We had our own NGO. We started with immunization program बच्चों के लिए. तो must have करीब 40-50 हज़ार बच्चों को तो टीका में खुद कराया होगा उन दिनों. तो we had 19-20 slums and villages adopt किए हम लोगों ने. फिर अपना एक curriculum बनाया. We started calling it पाठशाला. तो लोगों को पढ़ाने लगे हम लोग जाके विलेजेस में जाके. तो हम लोग के घर वाले हम लोग को बोलते थे, घर को होटल बोलते थे. बहुत पेरेंट्स बोलते हैं कि सुबह आते हो रात में जाते, कोई मतलब नहीं है. बट जेन्युइनली वी वर नॉट स्पेंडिंग एनी मनी ऑन वेस्टफुल थिंग्स. वी वर एक्चुअली क्वाइट इन्वॉल्व्ड एंड पैसे तो जेबों में होते थे नहीं. तो वो जो सारे एक्सपीरियंसेस पर्सनल थे वही फाइनली गानों में कन्वर्ट होने लगे. आई रियलाइज दैट. तो हमारे मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स उसी टाइप के रिफ्लेक्ट करते हैं. माय वाइफ एंड माय फ्रेंड्स स्टिल से कि यार हमेशा मेरे गानों में यही क्यों होता है कि जेबों में पैसे नहीं, या तुम दूर चली गई, तुमको पास में क्यों नहीं हो. मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स आर हैविंग दिस काइंड ऑफ लखनऊ की गलियों की वो फीलिंग्स, जब जेबों में पैसे नहीं थे, करने की तमन्नाएं बहुत सारी चीजों की थी. तो वो होता रहा. Then one small little, I mean, we were performing in campuses, लखनऊ में करते थे. पर ये तमन्ना जरूर थी कि we wanted to be the Beatles of India. Now Beatles were the greatest pop rock band of the world of all time, and तो हम लोग कर रहे थे, अपना करते रहते थे. Then we thought कि Beatles बनने के लिए तो आपको पहले तो हिंदी में गाना पड़ेगा. हम तो अंग्रेजी में गाते थे. तो we started translating our own songs into Hindi. तो शुरुआत में बड़ा अजीब सा लगता था. It's very easy to say, hey, I love you. और हिंदी बोले, hey, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लगता थप्पड़ पड़ जाएगा. You know, so we had to refine our languages. तो सीखना start किया. But one incident, I'll just get back to my class 10th, which impacted my whole life and still impacts me today. I would share with the students and all of you. Is I was class 10th में थे. There was this school principal of mine, Mrs. Sudarsh Kaur. I was in studying there in City Montessori School, Lucknow, class 9th, 10th में. So in one of those खाली period के दौरान, by chance she was taking a round and she came to the classroom and सब बच्चे एकदम से बोर होने लगे, ये principal class में क्यों चली आई, all that kind of stuff. तो वो कुछ हम लोग को मॉरलिटी की बात करने लगी. एंड आई वाज वेरी लकी. आई स्टिल से आई वाज वेरी लकी. मे बी कुछ प्रोविडेंस था, गुरुओं का आशीर्वाद था, माता पिता का आशीर्वाद था, भगवान का आशीर्वाद था. आई वाज जस्ट प्लेन लकी. मैंने उनकी बात सुन ली, एब्सोल्युटली उनकी बात सुन ली. मेरा ध्यान उन पर अटेंशन चला गया. उन्होंने मुझे एक छोटी सी कहानी सुनाई. वो कहानी थी कि छोटी सी कहानी थी कि वो एक इंडियन ट्रैवलर यूएस गए लेट 19th सेंचुरी में, एंड ही वाज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, कैलिफोर्निया और साइड से. तो इट वाज तो ही वाज जस्ट वॉकिंग. तो देखा हर घर के बाहर एक नेम प्लेट लगा हुआ था, बड़े बड़े घर थे, लिखा था मिस्टर स्मिथ, आई कैन डू इट, और इट कैन बी डन. मिस्टर विल्स, आई कैन बी डन. मिस्टर कोस्टा, इट कैन बी डन. समथिंग इस तरीके से हर घर के बाहर एक लिखा हुआ था कि ये मैं कर सकता हूँ. So he was very intrigued, and that traveler, आज से करीब 130-40 साल पुरानी बात होगी, 1890s के आसपास की. तो he walked into the sheriff. अमेरिका तब भी वेस्ट में काफी एडवांस था comparatively the rest of the world. So he walked into sheriff के ऑफिस में गए, या मेयर के जो भी रहे, उन्होंने बोला कि आई एम वेरी इंट्रीग्ड कि हर घर के बाहर ये क्यों लिखा हुआ है, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, और इट कैन बी डन. He said, पता है जहां पर आप खड़े हैं, this was the thickest jungle of the world probably. All kinds of the wildest of the animals used to be there, the lions and the tigers and leopards, जो भी आप सोच सकते हैं वहां पे, including snakes. And क्योंकि population कम थी, and there was a big rush toward the gold rush. If some of you remember, there was a gold rush in the western part of US at that time. So लोग भी आने लगे थे. तो क्योंकि पॉपुलेशन नहीं थी, तो लोगों ने बड़े बड़े पीसेस ऑफ लैंड लोगों को देना स्टार्ट कर दिया, वहां की गवर्नमेंट ने, जो भी लोकल गवर्नेंस मॉडल रहा होगा.
तो दिस टू थिक जंगल्स, पॉपुलर लोग थे नहीं, अब इतना आपको 20 एकड़ का एक फॉर्म दे दिया जाए, थिक पाइन ट्रीज एंड थिक बनियन ट्रीज, व्हाट डू यू डू विद इट? यू नो, दे डिडंट गिव अप। व्हाट दे डिड, एक एक दो दो आदमी मिलके ने पूरा लिया वो, और इसको वो एक एक पेड़ को काटने लगे। इमेजिन 10,000 trees to be cut, and there were no electrically operated machines. You had to do it physically, काटना पड़ेगा आरी से। So what they, अपने आप को निराशा से बचाने के लिए उन्होंने हर पेड़ के आगे छोटा सा छाल काटते थे, बड़ा सा पेड़ देखते थे 150 फीट ऊपर, कैसे क्या करेंगे, तने उसके इतने इतने मोटे होते थे, 8-8 फीट इस तरीके। तो उसमें लिखते थे ये मैं कर सकता हूँ, एक उसको अपने लिखते थे और फिर धीरे धीरे करते। तो इस तरीके से करके उन्होंने पूरे पूरे जो उनको एरिया मिला था उन्होंने पेड़ काटे, और फिर उसमें अपने खेत बनाए, रैंचेस बनाए, घर बनाया, जो भी बनाया। और बाहर जो फाइनली जो नेम प्लेट में उन्होंने एक उस चीज के फॉर द मेमोरी से उन्होंने छोड़ दिया। जब 6 साल बाद काट खत्म हुआ, 15 साल बाद उन्होंने काट के खत्म किया वो एरिया, तो फॉर जस्ट टू रिमेम्बर दैट ये पार्ट छोड़ दिया कि मैं ये कर सकता हूँ। I realized that part, अमरीश जी, सुष्मिता जी, की perseverance and patience is the key. हम सब ने, अमरीश जी, आपने, सुष्मिता जी, सब ने सपने बहुत देखे होंगे, सब देखते हैं सपने, और सब लोग टैलेंटेड होते हैं। There's no doubt कि हम में से ऐसा कोई भी नहीं है, चाहे क्रिस्टीना हो, चाहे प्रमोद हो, आपके पार्टिसिपेंट जो भी हो, जिसके पास एबिलिटीज नहीं होती। जरूर कोई ना कोई एबिलिटीज होती हैं जो कर सकते हैं, पर हम अपनी जिंदगी की दौड़ में, अपने बाकी कमिटमेंट्स में, किसी की फैमिली लाइफ हो जाती है, किसी को मजबूरी में तुरंत कोई जॉब स्टार्ट करना पड़ता है, कोई एक अनदर ब्रेक इन द वॉल हो जाता है, नहीं मुझे ग्रेजुएशन करना है, इंजीनियरिंग करनी है, डॉक्टर करना है, समाज यही चाहता है। तो बहुत सारे हम अपने पैशन जिसमें कि जो कि हमें रियल हैप्पीनेस देते हैं, समटाइम्स हम उससे दूर चलते जाते हैं, या कोई भी चीज। तो आई थिंक वी नीड टू परसिस्ट किसी चीज पे, कि अगर हम बड़ी से बड़ा पेड़ लेके हम बैठे हैं और हम सबसे शार्प आरी से भी काटें, पर हर बार उस आरी को उस 100 मीटर के तने पे, 100 फीट के तने पे, स्टेम पे अलग अलग जगह हर बार मारेंगे, तो आरी तो आफ्टर 2 साल बाद टूट जाएगी, तने को कुछ नहीं होगा अगर अलग अलग जगह उस आरी को चलाएंगे। पर अगर एक मोटी सी चम्मच से भी एक ही जगह आप उसको डिग करते रहें, 5 साल 10 साल बाद वो उस जगह होल हो जाएगा, पेड़ गिर जाएगा। But you have to stick to the same point. This is the key. I don't call myself a huge success. I call myself, I kept doing something, और जितना भी टैलेंट था मेरे पास, अच्छा बुरा, I don't know, it's not a very, I'm not a Mohammad Rafi, I'm not Kishore Kumar, I'm not R.D. Varman, I don't write like Gulzar. Yet in case I could have those 34 or 40 crore views of songs, having some kind of a bit of a name in doing something, it's precisely because I persisted. I persisted where others, जिस वक्त बाकी लोग शायद थक गए, मैं थका नहीं, और थकने के बाद भी I continued to do with it. So while I was, when I joined, जब ये मैंने छोटी सी बात इसलिए बताई because that will tell you what happened the rest of this thing, services. So then when I was in Lucknow, obviously we're doing so many things that I joined IIT Kanpur to do my doctorate. That was the first year when UGC started the fellowship and GATE scholarship for other subjects also. After 1987, I first became lecturer in monetary economics. So I'm a decent monetary economist also. So I became lecturer there. Then I joined IIT Kanpur to do my PhD. I was doing pretty fine there, but due to some reasons, my faculty member were leaving for USA, and और हमारे कैंपस में भी हर आदमी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, सारी चर्चाएं वैसे हो। तो मैं कब उस सिविल सर्विसेज की दौड़ में कूद गया मुझे पता ही नहीं लगा। And one fine day I realized कि I left the campus रातों रात, and I reached Noida to join an academy, prepare civil services, and took civil services and got through. But हर बार जैसे कुछ करते थे ये लगता था अच्छा, तो this was it, बड़े मुझे थोड़ा सा disillusionment होता था। So I always started looking for something else the moment I got something, because I wasn't satisfied. जब तक दूर का लगता है बड़ा अच्छा लगता है, but the moment you get it, you get bit close to the reality. And so once I joined civil services, IIT हुआ तो civil services जैसी हो गया, लगा कि अब क्या करेंगे यार ये, yes, मजा नहीं आया, सिलेक्शन तो हो गया पर मजा नहीं आया। Then for some time really tried
working in another sector, I joined Lintas ad advertisement agency. उनकी research. So we worked on this campaign called Pepsi का campaign था. यही है right choice baby and all that stuff. I got involved in that research. 1.5 महीने वहाँ पे किया, then वहाँ से finally छोड़ छाड़ दिया, अच्छा बोर हो गए. Then I joined the academy, and while in academy, I think through complete इस सारी journey में that my desire, and not desire but will to have a good rock band, popular rock band, which can play songs for the masses, that continued. So university maybe when we were winning all the numbers and prizes all the time, I decided I will not end up being in a small restaurant singing for my livelihood. I saw some of my great musician friends, absolutely जिनसे मैं in awe में रहता था. I found them playing in for their livelihood every day in a hotel. I said, yeah, ये तो नहीं करना है. You know, purpose something. It's not that is wrong, you know, but I felt this is, I'm not going to do this. That's also perfectly legitimate, you know, but I felt मैं वो शायद ना कर पाऊँ. So I kept, we just started composing and recording. उन दिनों इतनी recording नहीं होती थी, studios भी नहीं होते थे. So फिर लखनऊ में एक पोस्टर लगा था, एक जगह बैनर लगा था कि 100 रुपए में गाना रिकॉर्ड करो. तो मैं और मेरा दोस्त गुल्लू था. 100 रुपए में हमने कहा यार तो लॉटरी लग गई. 100 रुपए में तब तो हम वी थॉट, हम सब 4-5 दोस्तों ने मिलकर सोचा, वी हैड अराउंड 600-700 रुपए कंबाइंड विद अस. तो इकट्ठा किए हम लोगों ने 600. देन वी वेंट टू द स्टूडियोज, गाना रिकॉर्ड करने लगे. तो उन दिनों स्पूल पे रिकॉर्डिंग होती थी, डिजिटल टेप्स नहीं होते थे कि आजकल आपने गड़बड़ किया, एडिट किया, वापस रीडू कर लिया, कुछ नहीं होता, जो कर दिया तो कर दिया. तो ये तो व्हेन वी एंटर्ड द स्टूडियो तो वी वर इन ऑ. जब ऑ में पहुंचे तो वी थॉट कि वी हैव रीच्ड बीटल्स के जैसे एबे रोड स्टूडियो था, ये हमारा लखनऊ में एक छोटा सा स्टूडियो था, रकाबगंज एक जगह है वहां पे कि वहां पे स्टूडियो में था. उन्होंने ये तो हमारा एबे रोड स्टूडियो हो गया था, बहुत छोटा सा वो. सो एनीवे वहां पे पहुंचे तो जब गाना रिकॉर्ड कर लिया तो 4 दिन बाद, अच्छा उसी दिन हमें रात में जो लास्ट डे था, आई हैड टू गो फॉर माय सिविल सर्विस ट्रेनिंग एकेडमी. और ये भी था कि जाने के पहले इंडिया का ग्रेटेस्ट बैंड लॉन्च होना है. तो लखनऊ में एक छोटी जगह थी, सब दोस्त तैयार, ये अभी तो एल्बम रिकॉर्ड होके आ रहा है और अब तो ये हो गया, अब तो अपना डीजे मतलब वी आर ऑल वेरी क्लोज फ्रेंड्स. सब आप सबके भी रहे होंगे, सबके. वी आर ऑल थिक ब्रांच ऑफ दिस थिंग. मोबाइल नहीं होता तो रोज मिलने ही से दोस्ती होती थी. तो जब रिकॉर्ड करने होने दोपहर, जब शाम की रात की ट्रेन थी, दोपहर में 2:30-3 बजे किसी तरीके से रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो सडनली वो पूछा क्या पैसे. तो हम लोग पैसे निकाल के देने लगे, 800 रुपए. कहते हैं 800 रुपए में 3-4 दिन से स्टूडियो में काम कर रहे हैं, 800 रुपए. तो हमने कहा लिखा था 100 रुपए में एक गाना. कहते 100 रुपए में एक गाना लिखा था तो ये थोड़े लिखा था तुम 100 रुपए में एक गाना तुम 6 दिन तक रिकॉर्ड करते रहोगे. ये गेव शोले का डायलॉग, उसने बोला 2 रुपए में जंगल खरीद लोगे क्या. तो मैंने कहा यार ये तो आपने लिखा था, बट वी हैड ओनली 800 रुपीज इकट्ठा करके जोड़ जाड़ के. सो हमारा एक दोस्त था गुल्लू ने, अतुल टिमोथी हमारा गिटारिस्ट था, फ्रेंड लखनऊ में, नो इज ए टीचर. सो कहता है मैं अभी आया. मैंने कहा तुम कुछ पैसे जुगाड़ करो. तो कहता अभी आया. नहीं तब तक वो स्टूडियो का मालिक आया, साउंड इंजीनियर वाज हैड बिकम लिटिल फ्रेंडली. कहता सर हम तो कुछ नहीं कर सकते, ये स्टूडियो के ओनर है, वन मिस्टर रस्तोगी, आप इनसे बात कर लीजिए. तो आए. तब तक मेरे दोस्त गुल्लू ने बोला डीजे मतलब इंट्रोड्यूसिंग मिस्टर रस्तोगी को कि मैं IAS अफसर बन गया हूँ, वो थोड़ा जरा संभल के बात करें, अब नौकरी सिलेक्शन हो गया. तो वो दिखाने करने जा रहा था. जब तक वो समझे उसने अपना एक विजिटिंग कार्ड निकाला, मिस्टर सम रस्तोगी 7 Dan ब्लैक बेल्ट कराटे. he said कि मेरा ये स्टूडियो पे मेरा मेन काम तो मैं तो कराटे एक्सपर्ट हूँ. अब वो बोला तो गुल्लू का मुंह छोटा. ठीक है, कहते हैं ये तो 7 Dan ब्लैक बेल्ट निकल आया. अतुल बोला कि डीजे में ऐसा है, मैं बाहर जा रहा हूँ पैसे लेने, अभी आया. तो अतुल गए बाहर, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, अतुल वापस नहीं आया. हमने गुल्लू अतुल कहाँ गया. कहता है अच्छा मैं देख के आया. अच्छा 3 लोगों में पहले अतुल गायब, वो 7 Dan ब्लैक बेल्ट देख के. उसके बाद गुल्लू कहता मैं देख डीजे, तू चिंता न कर, मैं आया. फिर थोड़ी देर गुल्लू गए, गुल्लू भी गायब. अबे मेरा तो काटो तो खून नहीं. मैंने कहा यार ये क्या हुआ. देन आई रियलाइज ये लोग तो 7 Dan ब्लैक बेल्ट से डर गए रस्तोगी जी से. और ये गुल्लू बाद में बोले कि यार तू तो चला जाता अपने एकेडमी, यहाँ को कौन संभालता है इनको. तो
एनीवे बड़ी मिन्नत करके जुगाड़ उगाड़ करके उसके जो साउंड इंजीनियर था, मैंने कहा भाई कोई तो कैसेट दे, तो आज तो बहुत बड़ा बैंड लॉन्च होने वाला है, लखनऊ की इज्जत मिट जाएगी, मैं भी जा रहा हूँ, सब दोस्त लोग इंतजार कर रहे हैं, क्या होगा। तो उसने पता नहीं कि इसने कैसेट में टेप वेप करके दिया, पर तो जैसी था, मेरे पास छोटी बॉबी मोटरसाइकिल होती थी, मैं जल्दी से घर करके भागा, घुमाई लगाई, लखनऊ में एक शॉप थी, सब लोग तैयार बैठे थे, आ गया अपना हीरो आ गया, कैसेट लगाया उस दुकान में, तो कुछ चला ही नहीं, सरदार जी तेज चलाते थे, कुछ आवाज ही नहीं आ रही, कहते इसमें तो कुछ बहुत चू 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 करके कुछ आवाज है, कुछ आ नहीं रहा। हमने कहा बी साइड में देखो, कहता भाई टेप तो इसमें ए बी साइड का क्या है, उधर तक, मैंने बी साइड पर कोई आवाज नहीं आई। बड़े मैंने कहा यार उसने तो पूरा टेप करके दिया था। फिर एक बंदा आया मेरे कंधे पे हाथ रखा, डीजे चिंता ना कर, तू अपना रॉक स्टार है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये लेट इट बी। और उसने मैं भी निराश किसी तरीके से, क्या बताऊं। फिर एनीवे घर पहुंचे तो घर में सब नाराज बैठे कि रात की ट्रेन है 9 बजे की, साहबजादे जिन 7 बजे चले आ रहे हैं जा रहे हैं 4-5 महीने के लिए ट्रेनिंग, मोबाइल तो एनीवे। तो मेरे भाई, आई वाज द यंगेस्ट इन द फैमिली, तो सबने प्यार मोहब्बत से मेरी पैकिंग करके रखी थी, तो उन्होंने पैक वैक कर दिया। तो 100 रुपए जेब में रखे, जाने पहले भाई ने फिर जेब में पैसे रखे कि अपना ख्याल रखना, तुम जाओ। घर पहुंचे एनीवे, तो एकेडमी में भी चलता रहा, एकेडमी में भी गाने गाते रहे अपने, तो हमारे बहुत सारे गाने एकेडमी में सब दोस्तों को बहुत पसंद आते थे, तो कई गाने कैंपस में हिट हो गए। एक गाना आई से कम ऑन बेबी, शायद मैं रिलीज करूँ अभी इतने सालों बाद उसको, तो सबको बहुत पसंद आता था। तो वो दोस्तों के इंकरेजमेंट्स साथ में चलता रहा। उसके बाद के जब पोस्टिंग हो गई, सारी चीज हो गई, तो हर जगह में अपना गिटार लेके जाता था, कहीं पर भी जाता, तो आई केप्ट कंपोजिंग ऑल द टाइम। उसके बाद फिर सर्विसेज स्टार्ट हो गई, और कई बार ऐसा होता था, इनफैक्ट बहुत ऐसा हुआ, आई वाज फर्स्ट पोस्टेड इन भोपाल एंड माय वाइफ वाज ऑल अलोन देयर, शी वाज एक्सपेक्टिंग, एंड आई यूज्ड टू गिटार लेके मैं ट्रेन में जनरल डब्बे में बैठ के प्रैक्टिस करने गुड़गांव आता था, गुल्लू अपने दोस्त के पास, वीकेंड पे सैटरडे संडे को। कई बार तो एक बार तो ऐसा हुआ था, ट्रेन से इतनी भीड़ थी गिर जाएंगे डब्बे से, पर फिर भी प्रैक्टिस करने जाना था। तो एनीवे, I continued this journey, and then Aryans happened when I was in पुणे, एंड हर वीकेंड पे चले जाते थे बॉम्बे बात करने। तो अल्टीमेटली आफ्टर ऑल द स्ट्रगल्स एंड एवरीथिंग, कई बार ऐसा लगा कि नहीं होगा, और ऑल काइंड्स ऑफ लास्ट मिनट फेलियर्स होते थे, बट येट वी परसिस्टेड, एंड somehow after knocking on all the doors, there was no music company which was left. Finally Aryans happened, and songs, albums were launched. We didn't know that we become hit. मुझे आज तक नहीं समझ में आया, लोग गाने सुनते हैं, मुझे नहीं समझ में आया। मैं हर बार सबसे पूछता हूँ गाने क्यों सुनते हो हमारे, क्या अच्छे लगते हैं, मुझे नहीं समझ में गाने क्यों अच्छे लगते हैं। I really don't know. So, but we were surprised that we became pretty big hits, and then I continued the services. So उसमें तो सबके experiences होते हैं, but somehow I continued my music, and got involved with theater in between, got involved in sports in between, got armed forces in between. So God has been kind. I could do almost everything that I wanted. I mean, I could have done. I'm 57. So, but बहुत सारी चीजें हो गई, अब थोड़ी सी थकान भी लगने लगी, लग रहा हो गया things in life. Now I've started this music again after almost 16-17 years on a big scale. Launching this album after almost 15-16 years was a big challenge, and I had bit of my doubt, थोड़े बहुत doubts भी थे, but the overall sense that I could do it and I must do it to vindicate faith of so many. So I did it, and now I'm going to do I mean, all these things once again. Yeah, big time. I think I've had my bit. Yeah. Thank you, DJ Narain ji. So obviously we have, I mean, I myself have read a lot about you, your journey and all, and particularly if I can refer to this latest album of yours, तेरे नाम, मैंने खुद कई बार सुना है, और मुझे मतलब ऑनेस्टी से बता रहा हूँ कि सबसे जो अच्छी चीज लगी, और मैंने कई लोगों को सुनाया भी, जिसको दिया उसको ही पसंद आया, तो इसका मतलब कुछ तो ऐसा है जो उसमें अच्छा है। और आप मुझसे अगर पूछें तो वो इतना मेलोडियस है और इतना मतलब आसानी से उतर जाता है अंदर कि वो आपको अच्छा लगने लगता है।
तो म्यूजिक को अगर म्यूजिक लवर्स या म्यूजिक लिसनर्स के हिसाब से आप देखें तो आप तो चूंकि यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, यू आर क्रिएटिंग म्यूजिक, यू आर सिंगिंग, और सबसे अच्छा म्यूजिक वो है जो बहुत आसानी से हमारे अंदर आ जाता है और हमें समझ में आ जाता है। तो वो जो सरलता है, जो उसका इजीनेस, वही उसकी ब्यूटी है आपकी म्यूजिक की। You have hit it on the spot. I mean, many people say कि क्यों अच्छा है. Now I'm realizing it's simple music and helps a lot. Yeah, it's very tough to create simple things. एफर्टलेस है, बहुत आसानी से वो कम्युनिकेट होता है जी। एक चीज जो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि ऑब्वियसली आपने जैसे नरेट किया, आप मतलब आईआईटी से होते हुए, सिविल सर्विसेज से होते हुए और यहाँ तक आए, बट ये जो पूरा पीरियड था, अब चूंकि म्यूजिक में, आई मीन यू वर फीलिंग सो मच एट होम विद म्यूजिक एंड यू वांटेड टू create your own music and your own album and all, then why did you remain there so long in bureaucracy? आप सर अनम्यूट कर लीजिए। आई थिंक आपके अंदर का क्विंट एसेंशियल जर्नलिस्ट जाग गया। ये प्रश्न मुझको इतना पूछा गया है और लेजिटिमेट प्रश्न है, यू नो, कि क्यों कंटिन्यू कर गए। मुझे लगा कि दो चीजें, बोथ ऑफ देम गेव मी इंटेंस जॉय। दोनों में मुझे बहुत अच्छा लगता था काम करके, अच्छा लगता भी। क्या, व्हेन यू डूइंग पब्लिक सर्विस, आपका एक स्केल बहुत बड़ा था। हर चीज एक नेशनल होती है, हर चीज का स्केल होता है। जो भी चीज आप कर रहे हैं, इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन 120 करोड़, 130 करोड़, 140 करोड़ की पॉपुलेशन। So that gives you some kind of kick, which I can't explain it. Probably that was one reason. And secondly, this civil services kept me on a good intellectual platform, gave me that sense of satisfaction doing things. And music kept me interested and happy because it gave me such intense internal happiness. If you're on the stage, 4-5 घंटे कहाँ गुजर जाते पता ही नहीं लगता है. Only thing मुझे टाइम का, जब घड़ी ceases to exist is when I'm in the studio. Genuinely, it's a shocking कि सुबह गुजर और रात के 12 बज के पता ही नहीं लगा टाइम का. You know, that kind of stuff. So both of them gave me that happiness, and somehow I managed to continue this thing. और इस चक्कर में I had to sacrifice so many things. You don't have time for your lots of mundane activities. You know, कि आपके पास हर सैटरडे शायद आउटिंग के लिए टाइम नहीं होगा, आपके पास रेस्टोरेंट के लिए टाइम नहीं होगा, आप शायद बहुत सारे दोस्तों की बर्थडे पे फिजिकली ना जा पाए, you know, but friends understand you, but you do meet very frequently also. तो quality time becomes very important besides the most essential family time. family को तो आपको समय देना ही देना है, there's no doubt. तो आपकी बहुत सारी frivolous activities कम हो जाती हैं. You have to get bit disciplined without anyone telling you. तो आपको अपने आप ही एक समय के सीमित दायरे में सब चीजें करनी पड़ती है. आपको सेल्फ गिवन टाइमलाइंस बहुत सारी आ जाती हैं. एंड एक चीज और है which I can relate tell your students also. There's nothing you do 24/7. You can't even sleep 24/7. You can't. So हर चीज के लिए समय है. अगर हम चाहें तो उतना क्वालिटी टाइम दे सकते हैं. You know, the moment you see in the economics की अगर थ्योरी पढ़ी हो, हर चीज की diminishing return हो जाते हैं after some time. First it increases at increasing rate, then it plateaus, then it diminishes. So the moment you see कि आपके returns of an effort are going to plateau, जैसे plateau होने लगे, आप लगातार पढ़ रहे हैं, after some time आपको attention span कम हो जाता है, फिर हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं, आप बाहर टहलने चले जाते हैं, कुछ करने चले जाते हैं. तो when you do that, instead, जैसे आपने पढ़ाई छोड़ दी, और पढ़ाई छोड़ने के बाद instead of spending time on something, maybe you can pick up a guitar, maybe you can start painting, maybe you can start writing a poetry, maybe you start rehearsing something which is good in sports. तो ऐसी बहुत सारी चीजें कर सकती हैं कि उस diminishing return के पॉइंट के पहले आपने दूसरी चीज क्या चीज पिकअप कर ली.
चूंकि आप फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी रहे हैं, चूंकि हमारे तो सारे मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, एंड मेनी ऑफ देम माइट बी थिंकिंग टू मेकिंग ए करियर इन द विजुअल मीडियम, राइट फ्रॉम टेलीविजन टू फिल्म्स. So can you tell something with your experience of FTI, if there is something which you can communicate to the benefit of these students? देखिए, it's filmmaking has become very democratic. Okay, because of digital revolutions. पहले फिल्म मेकिंग वही करते जिसके पास एक बड़ा सा कैमरा हो, जिसके पास एक्सपेंसिव फिल्म रोल्स हो, यू हैव टू गो फॉर प्रोड्यूसर्स, यू हैव टू गो फाइनेंसर्स, ये सारी चीजें होती थी. तो हैविंग सेड दैट, that it's become very democratic, it's become very crowded also, because अब वो कैमरा और एक सबके हाथ में है. A person who doesn't know anything of the filmmaking also is a potential filmmaker. So filmmaking में अब वही I would advise one to enter. One is really serious about it. Okay, one is really serious about it and should take it very seriously in terms of its academics part of it, its learning part of it. And मतलब ये नहीं कहेंगे कि without learning, formal learning process, you can't be Satyajit Ray or you can't be Raj Kapoor or you can't be great exponents, Kurosawa or anyone. It's possible, but a formal learning and deeper understanding of the subject would take you away from the crowd. हर चीज में भीड़ बढ़ गई है. So you have to be on your own. You don't have to follow Ray. You don't have to follow Benegal. You don't have to follow Guy. You have to be on your own. नई चीज, something which has got a unique value would only that would be accepted. And as far as FTI is concerned, it's a very rigorous place to be in, and it requires a rigorous process of selection. We would, while getting selected to FTI, we filter people who are wannabes from people who are serious and wannabes. Okay, you have to be extremely serious, extremely passionate. It has to be, you have to be real cinema buff. तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1940 में आलम कोई फिल्म बनी थी, आलम मरा 1930 वाली, तो उसका सिनेमेटोग्राफर कौन था, उसका बंदा कौन था, पेरिस में फिल्म सपोज करी चल रही है, व्हाट इज इम्प्रेशनिस्ट मूवमेंट इन जर्मनी, कहाँ पे क्या फिल्म, मतलब एवरीथिंग यू हैव टू नो अबाउट इट, very fine and deeper detail besides your own talent. I can't force someone who's not a good actor to become an actor. In case you don't have a sense of colors or sense of basic continuity in life, I can teach you up to a point, but you should not end up wasting your time in case you just hard, क्योंकि सब लोग ऐसे ही करते. You have to be very careful and serious about yourself. अगर बनना कर सकते हैं बिल्कुल. Once you there, then you are beyond. Then you have आपने आपको बहुत सारा एक you jump the queue. The moment you say you're from FTI, you've jumped the queue. बहुत सारी जगह. It helps a lot, no doubt. You would start getting bigger projects, but you have to be real cinema buffs, not just watching buff. A history part of it, it's aesthetics part of it, so that we can filter the real persons. तो अब नारायण जी, अब हम मूव करते हैं towards the last segment of the program, and there are students who are waiting to talk to you and ask sure. certain questions. I'm also looking forward. Yeah. So students, you please come on camera and ask your questions, those who wish to. Yes, sir. Good afternoon, sir. How people around you reacted when you decided to make a shift or a switch, we would rather say, in your career from being a bureaucrat to a performer? See, I did both the things together. I rode two horses, I rode two boats together. It wasn't easy. And generally, people on the other side, for example, in bureaucracy, they would always be a bit of happy surprise and get amused. Arey, yaar, how come, you're a rocker? And people on the other side of the bureaucracy, that is the music field, they would be pretty surprised and amazed. Arey, oh, so you're a bureaucrat. So it was a sense of amusement and bit of awe was there. Rather than awe, bit of more of a surprise was there on both the sides. And it kind of tickles you also because it's not very usual. And one can do it. But yes, certain times people do get surprised. But now that I've just I've quit the service now 3-4 months back.
there was a bit of surprise in the bureaucracy circles because I was at a very senior position, very, very senior position. They say, when you actually have time, I had to really enjoy what bureaucracy is all about. Why are you quitting? Then I felt, I've done my bit. I mean, let me do something because life is one. Zindagi na milegi dobara. You should do something when people want you to be there rather than people want you to be there. So when I'm quitting the service, people ask me, why are you quitting? You could have been here. So, and when we left RNs at its peak, people were asking there, where are they? Where have they gone? We started, we reduced the performances and albums because we were really getting bored. That sense was always there. So people should wait for you and ask for you to be there. It helps. Christina, you want to ask a question? Yes, sir. Good evening, sir. My question to you is that understanding your passion takes time. So at what stage we should take the step to pursue it? There's no hard and fast answer for this thing, Christina. But I guess you can always pursue your dreams and passion at any time. There's no age. Even for when I was at FTII, there was somebody who said there should be a minimum age bar for the selection. So somebody said A.K. Hangal started his acting when he was in 60s. I don't know exactly when, but so passions, creative passions have no timelines. You can pursue it now, right at this very moment, because I just said earlier, you don't do 24 hours, everything at the same time. You can't play cricket all the time, 24/7. You can't do painting all the time. You can't do singing all the time. You can't do banking all the time. You have time for everything in life. You just have to have a proper time management, and you have to stay away from not the most of the important things. Just my tier 2 levels, probably you have to spend on aajkal ki generation mein, I must say, spending lesser time before the digital media or YouTube or social media. I mean, jitne bhi recent successes मैंने देखे हैं last 5-6 साल में, this one single script that runs all through. They shunned social media and digital media for 1 or 2 years to do something. All of them. And it is like a medicinal thing. You can't help it. You're from the people field of media, you can't do it. But you do it for the sake of your professional need, not for your social need. I would rather say that, in case you want to. Otherwise, life is pretty okay. I mean, you can do with social media and not doing anything extraordinary in creative fields and the field also. It's perfectly normal. But in case you want to, that is the cost one would have to be bearing. Right. So, Swarnima, you want to ask question? Swarnima Gupta. How was your university life and how did it affected your music career? University life was, very exciting. The best days of our lives are always university life. Your best friends are from the university lives, and friends, in fact, kind of inspire you. And because they're the one who were the first listeners. In fact, I gave lots of thanks to those friends who jailoed me while when I started composing my first song, and all kinds of notes, guitar ke chords nahi lag rahe hain, sur lagane padde, DJ, damn good. So दोस्त ही होते हैं जो आपका raw form में सुनते हैं. अभी तो I'm pretty well packaged, but at that time I wasn't packaged. The university helps you. University brings those, helps those, create those bonds. And university के जो experiences होते हैं after the school, they are the experiences which lay the foundation stone for the rest of your life experiences, your learnings, and what you're going to do. So university obviously was the most exciting part of so far my existence. I mean, that's the best days of our life, no doubt. You should also enjoy this part and do things which really shape your life ahead. One thing I wanted to ask again, Mr. Narain, about your family, particularly about your parents, the kind of cooperation that you got, and particularly since read the contribution of your father towards freedom struggle and all, and his contribution towards your making. If you can tell us something about that. Very, very personal question, Ambrish ji, but I will share. I mean, we are all in awe of our parents, isn't it? And we just love them and respect them to no extent, and we probably can give lives for them. वो तो आसानी से दे ही सकते हैं, बच्चों के लिए parents देते ही हैं.
but हम सभी लोग, most of us also respect our parents in the same way. So I was always in awe of my father. Generally पहले ज़माने में पापा लोग इतना मिलते नहीं थे जितना आजकल हम लोग दोस्त हो गए बच्चों से, यार तू कर ले, यार तू भाग जा, आजकल तो सारे बच्चे, पहले से नहीं होता था. सो उनके कम शब्द भी बड़े अच्छे वो होते थे, इंस्पिरेशनल होते थे. तो आई रिमेम्बर आस्किंग माय फादर वाज a freedom fighter. I knew my father was lots of things I knew, but I wasn't knowing the details. बच्चे लोग इतना इंटरेस्ट सीरियस हो नहीं पाते, और ये महसूस तब होता है जब वो चले जाते हैं. तब लगता है विश काश हमने उनके साथ समय और बिताया होता, काश हम उनसे ये और पूछ लिए होते, काश ये. अभी मैं गाना बना रहा हूँ इनफैक्ट, विच इज probably on all the fathers of our age. आप सबके पिता, उसके वर्ड इसी तरीके से हैं. निकल पड़ते थे रोज सवेरे हाथों में एक बैग लेकर, चरमराए जूतों में हम सबके कुछ ख्वाब लेकर. कभी ये ना सोचा कि कहाँ से लाओगे, कभी ये ना सोचा किस घड़ी से लाओगे, कभी ये ना सोचा कि कब आओगे, कभी ये ना सोचा. तुम्हारी छुट्टी ना सोची, तुम्हारा संडे ना सोचा, तुम्हारा बचपन ना सोचा, तुम्हारा ख्वाब ना सोचा, कभी ये ना सोचा. तो पेरेंट्स हम लोग ऐसे ही हो, isn't it? We hardly think about our parents. So मेरे पापा ऐसे ही में बैठे हुए थे. He was pretty old. I was the youngest son. तो मुझे कभी कभी तकलीफ भी होती है कि मैं भी उनके बुढ़ापे की तकलीफ भी था, in the sense कि I was young and he was old. See, he was a freedom fighter. He married late, and so I was born in 60s, and I mean whatever. So I was the youngest. So he was still, when I was in class 5, he had already retired from the services. So imagine class 5th में वो parents retire हो जाए तो किस तरीके का pressure होगा उन दिनों. और तो he kept working different things. So I remember once sitting when he was pretty old, he was almost 80. So I went to him कुछ बात करने, तो he said कुछ बचपन की अपनी कहानी सुनाने लगे. He was, मेरे पिताजी अनाथ थे. When I mean अनाथ means he lost his mother when he was in class, when he was 4-5 साल के थे, orphan थे वो. तो ही टोल्ड मी, वही उनको उनके दोस्तों के पिताजी के जो हमारे बाबा थे उनके बच्चों ने, दोस्तों ने पाला था. तो उनको बचपन में जो वो, आई सेड कि व्हाट इंस्पायर्ड यू. तो ही गेव मी वन, ही सेड वन, स्पोक वन लाइन टू मी. ही सेड बच्चे, ही सेड कि मैं, ही सेड कि मुझे उस ओर तू तूफान ले चल. किश्ती उससे बोलते हैं, माझी तुझे मुझे उस ओर ना ले चल जहाँ की शांति हो, मुझे उस ओर ले चल जहाँ की तूफान उठने वाला हो. So he said कि he was brave enough to face the तूफान. He was asking that now वाला not to take me to the place जहाँ पे शांति है, but rather to take me to the place जहाँ पे तूफान. तो हम सब की लाइफ में struggles आते हैं. Probably that really inspired me, and I was the youngest in the family, so I was very lucky. तो मेरे सारे भाई लोग ने मुझको अपने छोटे बच्चों जैसे almost treat किया. कोई मेरे लिए गिटार के पैसे ले आया, कोई किसी चीज के लिए आया, मतलब so those extraordinarily beautiful moments which I was lucky, and I'm lucky कि I was the youngest in the family and was supported by my parents. ये जरूर मेरे पिताजी बोलते थे, मैं एक बार की गाना गाने लगता तो सामने बैठे और उनको बिल्कुल संगीत से, साहित्य कला कोई दूर छू नहीं पाते. मैं गाने की टेबल बैठा हूँ, she loves you yeah ये चिल्लाने, खाना खाते बेचारे खाना रोटी खा रहे थे, एकदम से ले तो फिर गाने लग गए एकदम से बीच में. So while in the middle of the meal, suddenly I was shouting on the top of my voice, singing a song. So, but I always we take it as a pat, not कभी मना नहीं किया. और घर में खूब जोर से म्यूजिक होता रहता था, चिल्ला के. मेरे cousins who are also in bureaucracy, उन सब ने म्यूजिक किया, उनको देख के किया. मुझे बजाना तो नहीं आता, पर उनके हाथ कैसे चलते थे वो देख के किया. Jayanti Prasad, who's in audit accounts, he retired as deputy controller, auditor general. सरस्वती प्रसाद, बिकॉज तो झाम एसोसिएशन, घर में कोई मुडन हो रहा हो, किसी की शादी हो रही, तो वी यूज्ड टू कॉल, चलो हो जाओ. सो तो फैमिली सपोर्ट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी. वी नीड टू बी लकी. एंड पर आजकल के पेरेंट्स आर मच मोर अकोमोडेटिव. वो 3 Idiot मूवी ने हम सबका बाजा बजा दिया है कि वेयर पेरेंट्स कांट टेल स्टूडेंट्स कि नहीं, कि एक फॉर्मल करियर भी कर लो, ये भी कर लो. एंड बट आई मस्ट, सब बच्चों से जरूर बोलूंगा ये कि follow your passions, जितना कर सकते हो करो, but you must have a viable plan B, insurance plan. I was also a faculty at Institute of Mass Communication for some time, Amrit ji.
सो वहाँ पे मेरे पास बच्चे बहुत आते हैं, बीइंग थोड़ा सा आई वाज ऑलरेडी इनटू वीडियोस काफी आते, तो यंगस्टर्स यूज्ड टू कम टू मी फॉर वेरियस रीजंस, उनको अच्छा लगता था। दैट इज अर्ली 2003-4 की बात होगी। तो कई बार इस बात के लोग बच्चे आते थे विद सिमिलर क्वेश्चन कि क्या करे लाइफ में, क्या करे लाइफ में, मेरा सर शौक ये है पर ये है, शौक ये पर मैं करना ये चाहता हूँ, क्या मुझे। आई यूज्ड टू टेल देम यू कैन स्टार्ट विद वन इंजन, कीप द अदर इंजन रनिंग। एक इंजन पटरी पर लगना चालू हो जाए, देन दूसरे इंजन को साथ में पकड़ लो। अगर स्टार्टिंग फेज में सपोज मैं ब्यूरोक्रेसी में नहीं होता प्रॉब्ली, तो शायद मैं म्यूजिक को परसिस्ट ना कर पाता। इट्स नॉट इजी टू परसिस्ट। इसी मेरे बेस्ट ऑफ द फ्रेंड जो हमारे साथ के थे, जिनको कि आई स्टिल मिस, एंड वन ऑफ द रीजंस आई एम बैक इन म्यूजिक बिकॉज आई वांट टू डू म्यूजिक विद देम नाउ। जिन दोस्तों के साथ म्यूजिक स्टार्ट किया था, बिकॉज वो परसू नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ फैमिली इश्यूज, प्रेशर्स की वजह से, फाइनेंशियल। So I think that needs to be taken care of. So towards the end of the program, if you can oblige us, since you are such a celebrated singer, so everybody is eager to at least listen something from you. So if you can oblige us all. Yes. ये तो आपने मुझे वो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, एम्बुश कर दिया। ये तो चाहिए सर, ये तो चाहिए। अच्छा ठीक है, just once again I'll get my guitar. जी, okay. जी, एक जी। और मेरा एक्चुअल गिटार इज लाइंग समवेयर। मेरे घर में 3-4 गिटार हैं जो सामने पड़ा हुआ है। आप लोग आवाज आ रही? जी जी। सुष्मिता जी बड़ी खुश हो रही है। I love music. Oh wow, wonderful. So I'll sing this the song which is very popular, आर्यंस का, उसकी कुछ लाइनें गा दूंगा, एंड कुछ और रिपीट है। इतने सालों में गाते गाते अपने आप उसमें कुछ वेरिएशंस आ गए, तो काइंडली बेयर विद इट। कुछ इंग्लिश में थोड़े से स्टार्टिंग वर्ड्स हैं, फिर आगे कुछ। Ever since you've gone away, baby, I'm just missing you. Ever since you've gone away, baby, I'm just missing you. You're in my heart, you're in my soul, baby, I'm just missing you. Here am I all alone. Just once again. Here am I all alone. तेरे बिन बनती ना कोई बातें, तेरे बिन सुनी सुनी रातें। एक बारी कह दे दिल में आके, दीवाना मेरा दीवाना। हाय कहाँ गई वो रातें, वो मीठी मीठी सी बातें करती जो दीवाना। आंखों में तेरा ही चेहरा, धड़कन में तेरी ही यादें करती हैं। दीवाना मेरा दीवाना, दीवाना। I hope I did it. मजा आ गया। Really, I mean, I have no words to express my gratitude to you, since you were kind enough in sparing time, so much time for us, and even sang a song for us. And conclusively, if I can tell you what all is the gain of your session, since we conduct these kind of sessions, as I told you, for getting inspiration. So the takeaway, if I can tell, is the perseverance, the persistence that you said, and then finally, as you were saying, that just get one engine running, and then step by step you should follow your passion and all. And also, as I myself believe in that you keep on working and so many things at the same time. And if you're doing that, then obviously pursuing second thing after first and third thing after second becomes easy. So I think the young people, if they get this kind of inspiration, that जो आपने कहा कि आप थके नहीं और करते रहे, तो अगर लाइफ में कुछ भी करना है तो थकना नहीं,
तो जब तक आप थकेंगे नहीं, चलते रहेंगे, तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जो आप चाहते हैं, जो आपको खुशी देती है चीज, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है, वो आप करते जाएंगे। तो इस नोट के साथ ही हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स एवरीवन। सर ने एक चीज इसमें और बोली कि टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम मैनेजमेंट के साथ अगर हम कोई काम करते हैं तो रियली हम सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं, जितनी भी आपकी चीजें जो आपको इंस्पायर करती हैं और जो आप करना चाहते हैं, सब कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, everything is possible. I have just introduced myself on the social media platform for the first time. It's called, Instagram is called DJ Narain Official, and Twitter is called the DJ Narain. Just in case anybody wants to join, and it can, so that I can keep communicating and share things. Just in case, okay? Yes, sir. Bye bye. Take care. Thank Bye. You, bye. God bless you. The first impression that comes to our mind about any college: tall buildings, big classrooms, large lobby areas, thick books, IT labs, assignments, class tests, and projects. Nothing besides that. Every hour, minute, second spent here help us carving and shaping our persona, cultivating innovative mindsets for the challenging world. Learning is a lifelong process. Sharing knowledge, inculcating values of life, spark the innovative horizons of mind. Fun and frolic is the nature of every nook and corner here. A daily dose of thrill we are sure to get here.